Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to this new lecture. Dear students, as you know that in the previous lecture we have studied the classification of eumetazoans on the basis of body symmetry into grade radiata and grade bilateria in detail, and there we also studied that what is symmetry and the two types of symmetry, that is radial symmetry and bilateral symmetry, grade radiata and grade bilateria. But dear students, you must know that there are certain animals which are asymmetrical, which means they have no symmetry, they have neither radial symmetry nor bilateral symmetry. यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब ना उनमें रेडियल सिमेट्री है ना बायलैटरल सिमेट्री है. सो दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल organisms. Asymmetrical animals means no symmetry. For example, look into this structure, this diagram. This is the structure of a spongy phylum animal of phylum Porifera. So these animals have no symmetry, they have no body symmetry, which means their body cannot be divided into two equal hollows at any plane. इसका मतलब ये है कि इनके बॉडी को हम किसी भी प्लेन पे, किसी भी लाइन पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. सो दे हैव इर्रेगुलर शेप and their body cannot be divided, into two equal hollows or parts at any plane. So they are called asymmetrical, means no symmetry. So the only phylum which have no symmetry, which are asymmetrical, is the phylum Porifera, which is also known as the sponges, right? So dear students, this is all about asymmetry or asymmetrical organisms. The phylum Porifera, which are asymmetricals, they have no body symmetry, their body cannot be divided into two equal hollows or parts at any plane, right? Now dear students, look into these phylums. The phylum Porifera, the animals of phylum Porifera have no body symmetry, so they are asymmetrical organisms. Asymmetrical animals means they have neither radial symmetry nor bilateral symmetry. यानी phylum Porifera, जिसको sponges भी कहते हैं, इनमें ना रेडियल सिमेट्री है ना बायलैटरल सिमेट्री है, इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, राइट? जो पैलम सिलेंट्रेटा है या पैलम नाइडेरिया है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड दे हैव रेडियल सिमेट्री, राइट? ये जो सिलेंट्रेट्स है, नाइडेरिया है, इनकी कौन सी सिमेट्री है? बॉडी की रेडियल सिमेट्री है एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक. एंड रेस्ट ऑफ द पैलम्स, पैलम प्लेटिहेलमिंथिस, पैलम एस्केलमिंथिस आर नेमाटोडा, पैलम एनालिडा, पैलम मोलस्का, पैलम आर्थ्रोपोडा, पैलम एकाइनोडर्मेटा एंड पैलम कॉर्डेटा, राइट? जितने भी ये पैलम्स हैं, पैलम प्लेटिहेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, इन सब एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री है. दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, दे बिलोंग टू ग्रेड बायलैट्रिया एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एज वेल. और ये जो वर्टिब्रेट्स के 5 क्लासेस है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स और मैमल्स हैं, दीज आर आल्सो they also belong to grade bilateria. They have bilateral symmetry and they are triploblastic as well. So dear students, this is all about asymmetrical organisms and their examples. Thank you.